खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। गुजरात राज्य में 202 होमगार्ड परीक्षा में शामिल हुए। सूरत जिले के 9 तालुकाओं से 15 जवान परीक्षा में बैठे, जिनमें से 12 उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होने वाले होमगार्ड्स में मांडवी के 6 में से 4 और बारडोली के 3 को सर्वोच्च स्थान मिला। ऑफिसर कमांडिंग होमगार्ड सेवानिवृत्ति एवं 12 प्लाटून कमांडर रैंक स्टार अवार्ड समारोह पुलिस उपाधीक्षक की अध्यक्षता में मांडवी में आयोजित हुआ। मांडवी यूनिट में होमगार्ड फोर्स में सतीश भाई ऑफिसर कमांडिंग होमगार्ड्स पिछले 37 वर्षों तक मांडवी तालुका की सेवा करने के बाद आयु सीमा के कारण वे आज रविवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनका सेवानिवृत्ति समारोह आयोजित किया गया और सूरत जिले के 9 तालुकाओं की होमगार्ड यूनिट से कमांडर की रैंक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 12 होमगार्ड समान को मांडवी एजुकेशन सोसाइटी मुख्यालय सांस्कृतिक भवन मांडवी अभिजीत सिंह परमार रैंक लेने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वाईएसपी यह रेंज कार्यालय सूरत गांव की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और सूरत जिले की 9 तालुका होमगार्ड इकाइयों के 15 जवान परीक्षा में बैठे, जिसमें 12 होमगार्ड जवानों ने कमांडर रैंक टेस्ट पास किया। 01 पटेल विमला भाई गुणवंत भाई, 02 सायन, 02 पवार देवीराज भीमराज मांडवी सूरत ग्रामीण, 03 प्रजापति जिग्नेश कुमार दुरै भाई मांडवी सूरत ग्रामीण, 04 कायस्थ सुनील भाई भीखू भाई मांडवी सूरत ग्रामीण, 05 कायस्थ हिमांशु जितेंद्र भाई मांडवी सूरत ग्रामीण, 06 भंडारी अतुल कुमार देवा भाई बारडोली, 07 पटेल मनोज कुमार जीवन भाई बारडोली, 08 अनिल भाई नाथू भाई बारडोली, 09 बावेस्कर गोरख भाई आत्माराम पलसाना सूरत ग्रामीण, 10 नायका महेंद्र भाई चीनू भाई महुआ सूरत ग्रामीण, 11 गमीत रमना भाई ईश्वर भाई हर्ष सूरत ग्रामीण और 12 गोहिल नारायण कुमार चतुर भाई कोसंबा को उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा रैंक प्रदान की गई। साथ ही सतीश भाई होमगार्ड्स के ऑफिसर कमांडिंग कायस्थ को पुलिस अधिकारियों, होमगार्ड अधिकारियों, मांडवी नगर के राजनीतिक नेताओं और बड़ी संख्या में कायस्थ समाज के गणमान्य लोगों ने विदाई दी और शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस अवसर पर अभिजीत सिंह परमार समारोह के मुख्य अतिथि थे। वाईएसपी रेंज कार्यालय सूरत ग्रामीण डाये प्रफुल्ल भाई सिरोया जिला कमांडेंट होमगार्ड सूरत शहर, संजय भाई कायस्थ जिला कमांडेंट होमगार्ड भरूच, जेलजी मोड़ पुलिस निरीक्षक मांडवी निमेश भाई शाह अध्यक्ष मांडवी नगर पालिका और मांडवी नगर भाजपा अध्यक्ष प्रीतेश भाई रावल विशेष रूप से उपस्थित थे। सूरत के पलसाना विस्तार से नरेंद्र पटेल की रिपोर्ट। हूँ HM चुड़ासमा निवृत्त जूनियर स्टाफ ऑफिसर तालीम होमगार्ड गुजरात राज्य। आज रोज सूरत ग्राम्यना मांडवी यूनिट खाते वय निवृत्त थयेला श्री सतीशभाई कायस्थना निवृत्त समारोहनी अंदर मने उपस्थित रहेवानो आजे एमां आमंत्रण आपीने मने मौको मळ्यो छे, त्यारे हूँ एक तो एमने वय निवृत्तिनी शुभेच्छा पाठवुं छुं। साथे साथे खास करीने आज विशेष मने आनंद ए छे कि आज सूरत जिल्लाना जे 12 प्लाटून कमांडरो जे पोते परीक्षा आपीने जे सफलता एमणे प्राप्त करेली छे एमने रेंक धारण करवानो पण जे आज कार्यक्रम राखवामां आवेलो एनी अंदर पण उपस्थित मने रहेवानुं मळ्युं, ए बदल हूँ खरेखर मने भाग्यशाળી गणुं छुं। हवे जे रेंक धारण करवानो जे कार्यक्रम छे ए बाबते जो आपने खास जणावुं तो अमारा आदरणीय कमांडर जनरल श्री मनोज अग्रवाल साहेब કે જેઓ ગુજરાત રાજ્ય હોમગાર્ડ્સના વડા તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યા પછી આ દળ છે ખૂબ જ પ્રગતિના સોપાન સર કરી રહ્યું છે। રેન્ક ટેસ્ટની વાત કરીએ તો હમણાં છેલ્લા જે અમારા ચૂંટણી બંદોબસ્તો થયા એમાં અમને અધિકારીઓ થોડી અમને તંગી અનુભવાતી હતી, તો સાહેબે કીધું અમને બોલાવીને કે ભાઈ આ રેન્ક ટેસ્ટ ક્યારે થયો? કીધું સાહેબ છેલ્લા 6 વર્ષથી થયો નથી। તો સાહેબ કે તમે એમ કે રેન્ક ટેસ્ટનું આયોજન કરો। તો સાહેબના સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન સૂચન થકી અને એમના પ્રેરણા થકી આજે ગુજરાત રાજ્ય હોમગાર્ડ્સના પ્લાટૂન કમાન્ડર રેન્ક ટેસ્ટનું CTI જરોદ તાલીમ કેન્દ્ર ખાતે ટૂંકા સમયગાળામાં આયોજન કરવામાં આવેલું અને એની અંદર ગુજરાત રાજ્યમાંથી ટોટલ 202 ઉમેદવારો ઉપસ્થિત રહેલા, જે પૈકી सूरत ग्राम्य जिल्लाना 15 मांथी 12 अधिकारीओ आज पास थया अने एमनो रेंक टेस्टनो
કાર્યક્રમ આજે સફળતાપૂર્વક યોજાઈ રહ્યો છે, ત્યારે આ જે અધિકારીઓ છે દળને પોતે વેગબંધુ બનાવવામાં પોતાનો ફાળો આપશે અને વય નિવૃત્ત થયેલા જે સતીશભાઈ કાયસ્થથી એમનું નિવૃત્તિનું જીવન પણ સારું રહે તેવી હું દળ વતી અને નિવૃત્ત અધિકારી તરીકે બધાને હાર્દિક શુભકામના પાઠવું છું. વંદે માતરમ. જય હિન્દ. મારું નામ સંજય કાંતિલાલ પટેલ છે. હું સુરત ગ્રામ્યમાં હોમગાર્ડ કમાન્ડન્ટ તરીકે ચાર્જ સંભાળું છું. આજરોજ સતીશભાઈ કાયસ્થના વિદાય સમારંભના પ્રસંગમાં અમે બધા આમંત્રિત મહેમાનોને બોલાવી એક કાર્યક્રમ રાખ્યો છે, જેમાં સતીશભાઈ કાયસ્થને વય નિવૃત્ત તરીકે વિદાય સમારંભ આપ્યો છે અને સુરત ગ્રામ્યમાં ટોટલ 15 ઉમેદવારોએ પ્લાટૂન કમાન્ડરની પરીક્ષા આપી હતી. એમાંથી 12 ઉમેદવારો પરીક્ષામાં પાસ થયા છે, જેમને રેન્ક ધારણ કરવાનો આજે કાર્યક્રમ સાથે સાથે રાખ્યો હતો. અને છેલ્લા 6 વર્ષથી પ્લાટૂન કમાન્ડરની પરીક્ષા વડી કચેરી મારફત કોઈ આયોજન થતું ન હતું, પરંતુ મહેરબાન કમાન્ડર જનરલ શ્રી મનોજ અગ્રવાલ સાહેબના સાનિધ્યમાં ચુડાસમા સાહેબ હસ્તક આ કાર્યક્રમનું આયોજન થયેલ છે અને સફળતાપૂર્વક પરીક્ષા પાસ કરી અમારા સુરત ગ્રામ્યના 12 યુનિટના 12 અધિકારીઓ પાસ થયા છે, જેઓને આજે રેન્ક ધારણ કરવામાં આપેલ છે. અને સતીશભાઈ કાયસ્થને વય મર્યાદાને કારણે નિવૃત્ત કરેલ છે. જય હિન્દ, જય ભારત.